Yeah, good morning, everybody. Welcome to the session. Nanavati ji, welcome, sir. Day trader, great to see you. Good morning. So let's start. Let's see when we were asleep, क्या हुआ market में. So how was your day yesterday? ऊपर से तो reaction आया market में. Okay, good, fine. So let's start. So the headlines are just not going away. जो market में जो headlines चल रही है, just give me a minute. मैं अपना mobile silent पे कर देता हूँ. तो मार्केट में जो हेडलाइंस चल रही है, समटाइम्स इज टैरिफ, समटाइम्स इज यूएस अर्निंग्स, कभी ईरान आ जाता है, दैट्स जस्ट नॉट गोइंग अवे. सो यूएस स्टॉक फ्यूचर्स फॉल एज निविडिया कब्स प्रॉफिट. टेक में प्रेशर रहेगा पोस्ट अर्निंग गेन्स. ईरान टॉक्स इन फोकस, फिर से ईरान आ गया. सो राइट नाउ डेज आर टफ फॉर अ ट्रेडर, बट फॉर ट्रेडर डजंट मैटर, अब प्लान अच्छा बनाओ. मार्केट कभी भी इज नॉट लाइक गिविंग यू वेरी क्लीन, यहाँ बाई करो यहाँ प्रॉफिट बुक करो. यू हैव टू वर्क हार्ड राइट नाउ गिवन द वोलेटिलिटी. सो कल शाम को यूएस was up close to more than 0.5%. Nasdaq was up 1%. Futures are right now, I would say, mixed. Minus 65% doesn't make that huge an impact. Brazil is flat, 169 point is flat. Nikkei is with a cut. So globally, other than headlines, कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बन रहा आज के मार्केट में. And post that, let's go to the Nifty. This is SGX Nifty. XGF Nifty अभी 60 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है, 0.023. So SGX Nifty say that the opening might be on not a very negative note. देखिए SGX को हम सिर्फ opening point of view से देखते. After that don't focus. Then go to our own plan. Okay. So from there let's go to the market. As we always do, first we go to Nifty. अभी दो चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ट्रेंड और ट्रेंड चैनल. तो ये जो ट्रेंड चैनल बन रहा है, दिस ट्रेंड चैनल विच इज देयर, मार्केट राइट नाउ ये लो को मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ. सो मार्केट राइट नाउ इज जस्ट ट्रेडिंग विद इन दिस चैनल. तो प्लीज आर यू ऑल हैविंग अ पेन एंड अ पेपर एंड अ डायरी? आई वांट यू टू मेक अ डिटेल्ड ट्रेड प्लान in which you have to note down all the observations and just not listen. How many of you are having that? Write it down that currently market is undergoing a pattern of channel. और चैनल का मतलब है आप डेप्थ मेजर करो तो 2.25%. सो 2.25% की वॉलेटिलिटी रहेगी, एक दिन आधा टका ऊपर, एक दिन 1% नीचे, एंड दैट विल हैपन. बट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इज ट्रेंड साइडवेज है. साइडवेज ट्रेंड में लास्ट हाई का रेजिस्टेंस लेके चलो. इवन येस्टरडे इफ यू सॉ निफ्टी वेंट अप एंड फ्रॉम देयर इट डिक्लाइन. तो ये लक्ष्मण रेखा हो जा रही है मार्केट में. जब तक ये नहीं टूट रहा, टिल वी आर नॉट टेकिंग दिस आउट, द साइडवेज कंसोलिडेशन विच इज सेलिंग प्रेशर विल कंटिन्यू. और नीचे में एक बेस बन रहा मार्केट में, और जो बेस है इट्स रनिंग अराउंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एवरेज विच इज द 200-day मूविंग एवरेज. सो इसका भी आपको ध्यान देना है, बिकॉज 200-day पे बार बार मार्केट आ रहा और ले रहा. सो अभी कंप्रेशन इतना स्ट्रांग है ना 200-day में, लास्ट स्विंग आए, प्रोबेबली let's say it might gyrate within this range for this week, but next week it has to break outside. जो शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन है वो 3 से 5 दिन चलता है, और ऑलरेडी यहाँ पे कितने दिन हो गए. इफ आई टेक दिस हाई 1 2 3 4, तो काफी दिन मार्केट ने यहाँ पे निकाल दिया. सो दैट्स वे. और जैसे ये टूटा यू विल सी अ शार्प डिप. 200-day टूटा तो यू विल सी अ शार्प डिप टिल दिस चैनल लो. और अल्टीमेटली जब तक मार्केट ये हाई नहीं निकाल रहा है, आई विल मार्क इट ओवर हियर, channel high and this resistance. Tendency of this market will be to go and fill this gap. Getting my point?
तो ये लक्ष्मण रेखा आप नोट डाउन कर लो डायरी में, जो कि इन द रेंज ऑफ 25,658 और 25,758, ये जो 100 पॉइंट का है is going to be a very very pain for the markets as far as any pullbacks or rise is concerned. And the moment 200 DMA breaks, possibly we'll see one more sharp dip. So dip either sharp आ सकती है या it may be a drift, but ultimately it would be heading to fill the gap, provided a condition is till the channel high is not breached over here. So let me take some of the questions. Shekhar ji says, I feel market will correct and I feel lower range will break tomorrow. Agreed, Shekhar. But as a trader, that's your broader plan. Absolutely fine. So you can have that plan with this as a resistance, Shekhar. Absolutely perfect, right? And to trade the markets, after that, हम क्या करते? See, अभी तो हम लोग डेली में we make a broad plan, but that broad plan को हम लोग एक ट्रेडिंग प्लान में कन्वर्ट करना पड़ेगा for today, which is 26th. For that, let's go to the 60 minutes time frame charts. और 60 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट्स में अगर आप मार्केट का देखो, पहले तो आप ये गैप मार्क करके चलो, ये लो फाइन। अगर ब्रॉड हम देखें तो मार्केट लास्ट स्विंग हाई विच इज दिस, और यहाँ पे भी एक गैप है। तो मार्केट क्या हो रहा है, राइजिंग गैप और फॉलिंग गैप के बीच में विपसॉ कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। सो दिस गैप, लेट्स टेक दिस एंटायर थिंग and this is your 60 minutes in between जो what market halts and pause is are the 60 minutes low. तो आज के लिए मेरा ये मार्केट का मार्किंग है। अग्रीइंग एवरीबॉडी? सो लेटर ऑन आप थोड़ा यूज टू हो जाओ, देन वील गो टू 15 मिनट्स एंड पिक अप दिस थिंग, वेरी वेरी माइन्यूट ट्रेडिंग प्लान, बट फ्रॉम डेली एटलीस्ट अभी हम लोग 60 मिनट्स पे आ गए टू फॉर्म अ प्लान. So everybody able to see this? Have you taken note of it? See, सबसे पहले as a trader को what is the most important is price action. Because हिंदी में बोलते हैं ना भाव भगवान है, भाव भगवान है, भाव मतलब क्या, प्राइस एक्शन. सो नेवर एवर लीव द प्राइस एक्शन. आपके इंडिकेटर्स ऑक्सीलेटर्स सब बाद में लाओ, अगर क्लैरिटी नहीं आ रहा तो. मुझे इसी में क्लैरिटी आ रही है, सो आई डोंट नीड एनी इंडिकेटर ऑक्सीलेटर राइट नाउ. डेली में हम लोग 200 डे में 200 डीएम वी आर यूजिंग इट. So everybody take a note of it. Give me a yes or a no, friends. Kingsley ji, good morning, sir. Yeah, all have taken note of it. And plus, देखिए जो sharp dips आ रही है ना, so yes. And over here, the open interest is huge in 25,500 and 600 itself. Right. And plus, to trace such a choppy market, I'll just take you to a YouTube channel, and I would like you to spend 45 minutes, and I have discussed what we call a momentum trading for a day trader on a 5 or a 15 minutes. So I have done in detailing about it what we call a momentum trading system. आप अगर video section में जाओ तो you will get here what we call scalping on expiry day like a pro. आप इस पे ध्यान दो. Should I give you the link? एंड देयर यहाँ पे हमने एक डिस्कस की है एक which is currently should form part of your trading system. So I have given you the link. Make sure you go through it. Right? So हम लोग we are just having a broader plan. So my role will be क्या relevant study or system applicable है at any given point of a markets. I am making videos of the same. Those are elaborate videos, each 1 hour with a Q&A. And my job is to point out, given the market condition, this system will work well. Right? So apply this setup, and with this you can apply your multiple moving average trading system, which should be on a 5 minutes or a 15 minutes. 15 minutes, this is how market is looking. But मैं आपको 60 minutes or daily का plan I have made it for you. After this, let's go to Bank Nifty. Okay, somebody says he wants to see the system. See, it's a set of 5 averages, friends.
And next, I am also having a session on how to code those averages. Right? So apart from this, your volume weighted average price should always be there in front of you. You will not get in your broker's platform, but you will get it in the trading view. Broker's platform, you get the VWAP price, which is I would call a institutional line. Right. So once prices, I'll just show you the interpretation very quickly. If I now go to 5 or a 15 minutes time frame, let me go to a trader's time frame which is 15. So एक बार भाव VWAP छोड़ रहा है ना, that means sellers आ गए. Remember that. So VWAP is something which I want you from today to be daily plotted on your either 5 minutes charts or a 15 minutes charts based on your style of trading. Give me a yes, everybody, if you have understood it. Shekharji, I am not getting a question. 25,600 C is if we today sell gap up. See, I can't answer very trade specific questions, sir. The whole purpose of this to make you fully aware of how to take those decisions. Then I leave it to you, Shekharji. Is it okay? So VWAP आपको plot करके रखना है. VWAP is another study which we are introducing today in the this thing. And at VWAP, you can plot a 20 period average on a 5 minutes. तो यहाँ पे मैं 20 मिनट्स का एवरेज प्लॉट कर देता हूँ और एवरेज आई वुड जस्ट पुट इट इन फॉर्म ऑफ अ डॉटेड लाइन. सो आपको एक ट्रिगर और सिग्नल का एक इंडिकेशन आ जाएगा. यस. सो दिस इज वेयर आई नाउ गो टू माय 5 मिनट्स चार्ट्स. कैन यू सी यहाँ पे 5 मिनट पे क्रॉसओवर आ रहा है. भाव वीवैप के नीचे और एवरेज का भी क्रॉसओवर आ रहा है. वंस यू नोट दिस दैट यू मीन्स सेलर्स आर कमिंग. That's how I explain bullish above that, bearish below. Use a 20 period average to create a signal. So I've just introduced you the topic, Kingdomastic. We will have a session on this. Okay, but all I want to say is देखिए ट्रेडर के लिए VWAP और VWAP के आसपास एक एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है. We need to know when the buying and the selling is coming. Just see yesterday, price was below VWAP. There was a pullback. VWAP acted as a resistance. See, हम लोग अभी तक डेली कर रहे थे. डेली से आप कम to 60 minutes. Next we'll go to 5 and a 15 minutes. So I'll just remove everything what I have done. So be there regular in the sessions, and this is your plan for the day. Follow it. Okay. After that, let's go to बैंक निफ्टी में हम जाते हैं. See, बैंक निफ्टी में जो टेक्निकल पैटर्न बना है, इसको मैचिंग लो बोलते हैं. दो पैटर्न बने बैंक. देखिए बैंक निफ्टी जो है रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, बट सेलर जोन को आइडेंटिफाई करके रखो बैंक निफ्टी में. बिकॉज बैंक निफ्टी जब भी ये रेंज में जाता है विच इज 61,400 एंड ऑल द वे टू 61,700, हमें एक चीज देखा, बार बार इट्स गोइंग देयर एंड इट्स हिटिंग डाउन, which means this is clearly defined as a seller's zone. How many of you agree? Give me a yes, friends. Let's make it interactive. It's not like a parvachan. I am also learning from you, Daily Trader, Nanavati ji, then Shekhar. Right? How many of you agree? Give me a yes or a no. Yeah, Naveen. In previous bullish candle faded over here. Bullish candle faded over here. Again, if you see a bullish candle saw a rejection over here. If you are getting a wick on the upside, it's a rejection. तो एक चीज तो क्लियर है, यहाँ पे बहुत बड़ा सेलर है. एट द सेम टाइम आपको और एक चीज क्या करनी है बैंक निफ्टी में इज दैट you have to take a channel. So we'll discuss that, but let me come back. तो yesterday मैचिंग लो है. मैचिंग लो का मतलब है 2 दिन का लो सेम है. इसको ट्वीजर बॉटम भी बोलते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जापानीज कैंडलस्टिक्स, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. और यहाँ पे बाइंग सपोर्ट आ रहा बैंक निफ्टी में. सो बैंक निफ्टी का अगर हम रेंज बना दे फ्रॉम येस्टरडेज 2 days मैचिंग लो ऑल द वे डाउन टिल प्रीवियस कैंडल्स राइज. सो बैंक निफ्टी अभी एक कंप्रेशन जोन में चला गया. सपोर्ट इज नो डाउट देयर बिकॉज पीसीआर इज आल्सो मोर देन 1. सो पुट राइटिंग ज्यादा है विच इज गिविंग कुशन टू इंट्राडे डिप्स और डिक्लाइंस. आपको एक टेल मिल रही है. टेल मींस बाइंग प्रेशर इमर्ज हो रहा फ्रॉम इंट्राडे डिक्लाइंस.
That's how Bank Nifty is in a compression mode, very tight range, which is 60,700 to 61,300, which is 600 पॉइंट का एक रेंज है और इसमें ही रहने वाला. लेट्स सी विच साइड इट ब्रेक्स. सो दैट्स बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में आप ध्यान दो, देर इज अ ट्विजर बॉटम, व्हाट वी कॉल अ मैचिंग लो प्लस एन इनसाइड डे. और शॉर्ट टर्म स्विंग जो हम देखते हैं ना, 1 2 3 4 दिन का रेंज हो गया, इट हैज टू ब्रेक आउट ऑफ दिस रेंज. एंड और एक चीज जो बैंक निफ्टी में पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, विच इज येट नॉट कंफर्म, बट आपको ध्यान देना उसको, ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर दो भाई. तो देयर वाज मोर टच पॉइंट ओवर हियर. सो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आ रहा है. इफ इट ब्रेक्स दिस और कंप्रेशन आ रहा है, टेक दिस हाई. तो नाउ ये एक ट्रायंगुलर कंप्रेशन में जा रहा है बैंक निफ्टी. सो कीप अ नोट ऑफ दैट. और अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करते, सी वी टेक सो मच एफर्ट because Stocko Incred money is all about for the traders and by the traders, right? So if I go over here and we go to our, sorry, मैं अब नोट पे ले जा रहा हूँ आपको. How many of you are aware that we are putting out a note? कितने जन को पता है? Because I spend close to 3 hours daily to figure this out. So we are taking lot of effort to. So this is for today. Daily candles suggest selling pressure in the markets. So this is how the markets are. Now let's go and look at the open interest. So are you all aware of it? I'll just put the link. Make sure you subscribe. You'll get it in the mailbox. I finished writing by 7 o'clock. So you'll get it in your mailbox on a daily basis. इसमें मैं काफ़ी डिटेलिंग करता हूँ. सो अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं निफ्टी में वीकली में, तो 25,600 की स्ट्राइक पे 86.75 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े कॉल में एंड एट 25,700 84 लाख. अगर 25,600 और 700 का ही रेजिस्टेंस बैंड अगर हम लेके चलते हैं तो इसमें करीब करीब 1,60,00,000 का ओआई है. सो 25,600 से 700 का जो जोन है वो काफ़ी टफ रहने वाला मार्केट के लिए. Yeah, I have given the link in the chat. Please take it, sir. मैंने लिंक पोस्ट कर दिया. Great to see you are asking for this. Amit Kumar, kindly confirm. I have given the link. Okay, Amit ji. Yeah, just put a yes. I have posted the link in the chat. It's trading with Stocko Substack. तो ध्यान रखिए, ओआई और प्राइस का भी रेजिस्टेंस है. सपोर्ट में बहुत फ्रेजाइल सपोर्ट है 25,400 का, बिकॉज यहाँ अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखो तो सिर्फ 51 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है एंड 25 मेन ओआई आपका है 25,000 पे 57. सो 25,400 इज अ सपोर्ट लेवल फॉर ट्रेड ट्रेडर्स. वो निकल जाता तो एक नरमी दिखेगी मार्केट में. और तो ऊपर में 25,600 वो क्रॉस किया तो 700 क्रॉस करना बहुत टफ है. तो प्राइस एक्शन प्लस ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो सजेस्टिंग 25,600 से 700 का एक रेजिस्टेंस जोन है और नीचे में 25,400 एक नरमी का जोन है. इफ इट ब्रेक्स वी कैन सी अ डिप. सेम वे अगर बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट इज अराउंड 61,000 एंड दिस बिलोंग टू द स्ट्रैडल ट्रेडर्स. फाइन, दिस बिलोंग टू स्ट्रैडल ट्रेडर्स. उसके पास अगर आप देखिए तो 61,600 जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास है और नीचे में 60,400. तो बैंक निफ्टी में विंग्स पे हुआ है. विंग्स मतलब करंट भाव के नीचे, काफी नीचे एंड करंट भाव से काफी ऊपर. सो काफी नीचे मींस भी 500 पॉइंट्स बिलो ऑन द पुट्स एंड 500 पॉइंट्स अबव इन द कॉल. बट बैंक निफ्टी में जो पीसीआर है ना वो 1.11 का है. तो अभी भी पुट राइटिंग इज मोर हैवी than the call writing, तो which suggest the intraday dips are getting cushioned on bank nifty. ये एक के नीचे आएगा तब हम बोल सकते हैं नरमी का दौर स्टार्ट. वी कैन से दैट a corrective decline can start in bank nifty. Till that point of time it's volatility. Anything one and above, put writers are strong. Let those guys get stopped out. So अभी अपने पास वो evidence नहीं है. We just go on what the build up is right now. And daily we also cover stocks to watch. सो आज हमने जाइडस लिया. जाइडस पे ध्यान रखो 925 का एक रेंज ब्रेकआउट है.
and LNT का breakout पे support है. So we cover Nifty, Bank Nifty and few of the stocks, which is again my channel name is Stocko Incred Money. Fine. So again, that's all from my side. Again, we'll meet at 3:45 today evening. So before I go, let me point out what is important. So this is the matching low on Bank Nifty, last 2 days low. और निफ्टी में इट्स द 200 डे मूविंग एवरेज और रेजिस्टेंस अभी सबको पता है 25.6 to 25.7 बैंड. So that's all from my side. Before we end the session, let me read out the disclaimer part. So how are the sessions? How you are liking it, friends? These sessions are for you. आपको जैसे लगता है, you just put in a comment. We will incorporate it. Good, bad, ugly. Please give your feedbacks. Do put in some comments. So this is for educational and informational purpose only and does not constitute financial advice. Amazing as always. That's great. So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice day, everybody.